Talk about the dental anesthesia and the outline for the today's session are the general consideration for the dental anesthesia and the sedation for the dentistry and outpatient anesthesia, day case anesthesia and inpatient anesthesia. So outpatient anesthesia, a patient who is not a bed uh, patient and does not need to stay overnight. So ऐसे पेशेंट जो है वो आपके आउट पेशेंट एनेस्थीसिया में आ जाते हैं. डे केस एनेस्थीसिया पेशेंट who comes to hospital for more involved procedure than the outpatient. You may need some recovery time, but you should be able to go home on the same day as जो आपके आफ्टर दी जो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स है उसके फ़ौरन बाद जो वो ख़त्म हो जाते तो फिर आप उसी दिन जो है वो जा सकते हैं डे के एनेस्थीसिया में भी. Inpatient anesthesia, a patient who required stay in hospital for more or over the nights जिसमें आपके 2-3 जो है वो दिन आ जाते हैं. So the general consideration, simple extraction needs nasal mask, ventilation or block required mandibular block है, local infiltration with the lidocaine or जो local anesthetic है with or without sedation depending upon the patient preferences. Laryngeal mask airway, it either be plain or flexible, are preferable for the multiple extraction. Laryngeal mask airway. The use of pharyngeal packs जो है हम यूजली करते हैं during dental anesthesia और dental procedure और maxillofacial surgeries में. So general anesthesia who are unable to tolerate local anesthesia, उसके बाद जो है फिर आपने local की बजाय general पे देना है, because young children होते हैं उसमें आपने जो है वो GA पे जाना हो या उन पेशेंट में जिनके जो mental retarded पेशेंट होते हैं. The selection criteria is based on the American Society of Anesthesiology Class 1 and Class 2. ये पेशेंट जो है वो आप कर सकते हैं फॉर दी लोकल के लिए भी आप कर सकते हैं. और उसके बाद अगर आप क्लास 3 पे जाते हैं, क्लास 4 के बाद जाते तो कंसिक्वेंसेस उसके बहुत अच्छे नहीं होते. फिर एंजाइलोसिस फॉर द मेंटली हैंडीकैप, उसमें आपके डाउन सिंड्रोम है, कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज है, बिकॉज इसमें क्या होगा जो एयरवे डिफ़िकल्टी और भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर वो irritated करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर. सो बिफोर गोइंग फॉर द एंजाइलोसिस चेक द अदर पैथोलॉजी एज वेल. पोजिशनिंग ऑन द पेशेंट जो मेजॉरिटी हम करते हैं फॉर द डेंटल एनेस्थीसिया डेंटल प्रोसीजर्स वो सुपाइन ही करते हैं. वी शुड अवॉइड हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सुपाइन पोजिशन. The facilities should be the same as for the other day case surgeries, like आपके जो ENT surgeries हैं या आपके जो general surgeries हैं. So restoration work can take over an hour and after require intubation and ventilation. Arrhythmia के chances बहुत ज़्यादा हैं because of the hypoxia, hypercarbia and inadequate anesthesia, and जो inhalation effect है उसकी वजह से भी arrhythmia के chances बहुत ज़्यादा हैं. Talking about the internal carbon dioxide may be difficult to measure because nasal mask जो है वो हम यूज़ करते हैं उसमें आपके internal carbon dioxide जो measurement है वो थोड़ा सा difficult होता है. Sedation for the dentistry, patients who are unable to tolerate dental treatment under local anesthesia can often be managed by a combination technique using sedation. Sedation क्या है? The depression of the patient awareness to the environment and reduction of his or her response to external stimulation. This is called sedation. The general consideration, patient should be ideally in class 1 or class 2 according to the American Society of Anesthesiology. Say a patient counseling regarding the procedure and avoid heavy meal alcohol prior to the surgery. Although if you are going for the local anesthesia or the without the sedation, but you can turn it to the जनरल एनेस्थीसिया एज वेल. सो जो प्रिकॉशन में ये है उसमें आपने जो है वो इन प्योर टाइम जो है वो मेंटेन रखना होता है. किसी भी टाइम आप जीए पे कन्वर्ट कर सकते हैं. चेक फॉर द नेजल पेटेंसी, अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो यू शुड गो फॉर द नेजल मास्क. सो लोकल एनेस्थीसिया इज यूज्ड इन ऑल द पेशेंट फॉर सेडेशन which has been established. The patient should be able to communicate throughout the procedure. मेजॉरिटी जो लोग एडल्ट होते हैं और जो कि रिस्पॉन्सिव होते हैं और जो कि टॉलरेट करते हैं तो फिर वो उनके लिए लोकल बेस्ट है. सेडेशन की गोल कौन सा होनी चाहिए? सो दी प्रोवाइड ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सर्जरी प्रोसीजर, ताकि वो पेशेंट इंटरप्ट ना करें. मिनिमाइज पेशेंट एंजाइटी फॉर द प्रोसीजर एंड फॉर द सर्जन ऑपरेटिंग एंड दी ऑप्टिमाइज पेशेंट कंफर्ट, उसके लिए भी कहते हैं कि वो मुझे आप सुला दे. सो कंट्रोल पेशेंट बिहेवियर एंड मोमेंट एंड ऑप्टिमाइज पेशेंट कोऑपरेशन, प्रॉपर एनाल्जेसिया एंड मिनिमाइज पेन.